हाय, फिर आ गए तुम लोग। यार जब मैं पढ़ रहा था ना तब मुझे पता है, पढ़ते पढ़ते जब कुछ नहीं आता था ना, ऐसा लगता था टूटा हुआ हूँ एकदम, मैं कुछ नहीं आता मेरे को, दिमाग कम है मेरे अंदर। टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं, सीने में जो कहीं पे दबी है ऐसी कोई आवाज हूँ मैं, सुन ले मुझे तू बिन कहे, कसमें भी दूं तो क्या तुझे, आशिकी बाजी है ताशिकी, टूटता बनता विश्वास की, मिलने मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी, वो खुद से या खुदा से इस पल मेरी लड़ाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी, क्या ओ पागल वागल हो क्या? पढ़ने आते हो गाने सुनने आते हो तुम लोग? पढ़ने आए हो ना तो चलो इसी बात पर। अब जिंदगी में एक चीज बहुत जरूरत है, आगे जाके जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, समझ में आना चाहिए ना लाइफ में कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी किया है यू नो इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग थिंग और अ लॉस मेकिंग थिंग, यू शुड रियलाइज हाँ सर ये तो होना चाहिए। उसके लिए क्या आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए, इंपॉर्टेंट। यस, सो यू विल कवर सर्टेन बेसिक्स और समझेंगे कैसे रोट लर्निंग, रट्टू तोता नहीं बनना है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड अ वेरी कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव। शुरू करते हैं आज का यह सेशन। These are a few formulas which you might have seen across your books. Okay, I am not of the opinion that you should remember or do rote learning, but basics. Let's just understand बोल क्या रहा है। Profit क्या होता है यार? Whatever is your selling price, if you cut the cost price, that is profit. Yes or no? I'll give you a very simple concept. Don't have to remember all this. These are the formulas that you had learnt in school. Yes, सारे formulas स्कूल में सीखे थे. Sir, profit percent होता है profit upon cost price into 100. Yes or no? What would loss be? Cost price जितने में तुमने खरीदा था, समझो 100 रुपए का खरीदा था, you sold it for 90, so 100 minus 90, what is the loss? 10 rupees. Clear, easy peasy. Okay, a few terms which you may or may not know, we will see. यहाँ I think all terms are recognizable. If no, समझ में आने ही वाला है. Here for some people it becomes a little difficult to understand what is markup. Markup क्या होता है? आसान भाषा में समझते हैं यहाँ पर। देखो, there are three things, only three things: cost price, marked price and selling price. We will try to write it down. Cost price एक basic triangle बनेगा, marked price which is pretty high and the selling price which is somewhere in the middle, something like this. Understand? Now एक shopkeeper करता क्या है? He says okay, I bought it for 100. shopkeeper ने 100 रुपए में खरीदा, he bought it for 100. He marked up the price. उसने प्राइस ही डाल दिया 150 rupees. He's put it up as 150 to be sold at. Yes. Now what happens? ये होता है तुम्हारा मार्कअप. This is called markup. कितना परसेंट मार्कअप है? How much percentage? 50% markup. This is your markup percentage. I hope this is clear. This should be very easy and understandable. Okay. Now शॉपकीपर क्या बोलता है? सर सिर्फ आपके लिए ना मैं डिस्काउंट लेकर आया हूं. He offers a discount of let's say 20%. How do you find 20% of this? 10% is 15, 20% is 30. Give him a discount of 20%. What will be the price of the final product? Sir, that would be 150 minus 30, which is 120. Now this selling price is still higher than the cost price, which was 100 rupees. Yes or no? कितना प्रॉफिट है? व्हाट इज द प्रॉफिट? ही बॉट इट फॉर 100 एंड सोल्ड इट फॉर 120. द प्रॉफिट इज 20%. दिस इज द एंटायर गेम. दिस हियर इज योर मार्कअप परसेंटेज. इज दिस क्लियर? दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस. Here comes the discount. Okay, discount percentage. Always remember, markup किस पे होता है? On cost price. You're marking up on cost price, right?
डिस्काउंट किस पे मिलता है? ऑन मार्क्ड प्राइस. आई होप दिस इज क्लियर एंड यू अराइव एट द सेलिंग प्राइस. दिस इज द कॉन्सेप्चुअल थिंग. ये आ गया. मोस्ट क्वेश्चंस विल बी सॉल्वेबल. नाउ markup, if you understand from here, markup is marked price 150 minus the cost price which is 100 rupees. कितना है? This comes out to be 50. So the markup is 50 rupees. Markup is 50 rupees. Markup percentage is 50%. Is that clear? I hope this is. So discount percentage would be discount offered. Now discount percentage for us was 20%. So technically discount is given on marked price. जिस चीज पे दिया जाता है that comes in the denominator. Discount is given on the marked price. Awesome. Okay. Then profit percentage in the previous slide where we saw profit percentage is calculated on cost price. Hence denominator में cost price. Questions करोगे और easily बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी चीजें. This chart is pretty important for you. Moving on. एक आध सवाल देखने की कोशिश करेंगे. Okay. A shopkeeper sells a watch for 2400. Be very observant about what word sells. This is the selling price. 2400. Okay. At a profit of 20%. You don't need to write this is school method. School जैसा कुछ नहीं करना है. He sold it for a profit of 20%. So essentially, cost price को 1.2 times. This is 20%. Yes or no? 1.2 of CP is equals to SP. कोई शक नहीं होना चाहिए. What would have been the profit or loss if we sold it for 2000? Now it's very easy to compute. See, selling price is 2400, right? First of all, find the cost price. This 1.2 goes below. Solve this, you will get cost price as 2000. Cost price is 2000. What are they asking? What would have been the profit or loss if we sold it for 2000? Cost price 2000 है. He sold it for 2000, so the profit or loss is 0. I hope there is no doubt here. Very basic. Understand how did we write 1.2? This should be very clear to you. हमने percentages में सीखा है ये. If you're still not able to write, go back to percentages, solve this, and then come to this chapter. Percentages, profit loss are going to be the base for quants. यहाँ miss करोगे, you will struggle throughout the quant section. You will be languishing at the bottom. I'm telling you right now. वापस जाओ, पढ़ाई करो अगर नहीं आ रहा है. Is that clear? This is easy. Okay. Sir, how would a 99 percentiler solve this? वो तो ना verbally करेगा. Profit of 20%. So 1.2 times of CP is 2400. He gets the CP in his head as 2000. वहीं पे उसको clear हो गया sir profit या loss 0 होगा. Is that clear? Next, a person bought 2 items. He sold one at a profit of 25% and the other at a loss of 20%. The total cost price is 4000 and total selling price is 4100. Find the cost price of each item. Okay. काफी कुछ है. Let's try and figure this out. Okay. So eventually what is happening? See the cost price. Total cost price is 4000. Yes or no? Any doubts here? Total selling price is 4100. So what is the profit that is drawing? So profit होगा 100 रुपए. The profit is 100 rupees. Yes or no? Any doubts till here? 100 rupees is the profit. I hope this is clear until now. Okay. He sold one item at 25% profit. Okay. Let's say the total cost price is 4000. Cost price of first item is X. So the cost price of the other item would be 4000 minus X. Absorb this. This should not be a tough thing, but this is how it is. This is the cost price of first item X and 4000 minus X is the cost price of the second item. Now he makes 25% profit. That is 0.25 of the cost price. That is the profit from first item. पहले से profit. दूसरे से from the second there's a loss of 20%. So that is, let's subtract 0.2 of 4000 minus X. Do you understand this? Understanding this equation is critical. This is the cost price of the second item. Yes or no? Okay. So he has a loss of 20%. 20% का नुकसान हो रहा है उसको यहाँ पर. ठीक है. तो पहले से जितना प्रॉफिट कमाया और दूसरे से जितना लॉस खाया, that should be equal to his net profit or loss. His net profit or loss is profit, which is 100 rupees. That's it. You needed to solve this equation. Now let's solve this. What is this? 0.25x minus 0.2 into 4000. Come on, you should be able to do this. नहीं आ रहा है तो डूब जाओ. Okay.
minus minus plus, that is plus 0.2x is equals to 100. Any doubt still here? Okay, let's subtract or add? It is add. 0.45x is equal to 800 goes there, which becomes 900. X kitna aayega? Be careful with the points. 900 upon 0.45. Can I write 0.45 as 45 upon 100? Upon 100 goes up into 100. Yes or no? This becomes 2. 0. 20 into 00 is 2000. That is the, now be sure, what was x? X was the cost price. Okay, so x आया, oh sir, 2000 or total 4000. So the cost price of both items were equal, which was 2000 and 2000. Sir, इतना सब करना पड़ेगा? Yes, but a very smart 99.xx percentiler in CAT, what would he do? You know, generally what happens is CAT is a very number friendly exam. So what would people do is, they would simply see 4000 here, they will try to equate it once. He'll say, let's say the cost price of both the items is 2000 each. He will check 25% profit on 2000 is how much? 500 rupees, yes. 20% loss on 2000 is, calculate 20% of 2000, 400. What is the net profit or loss? 100. That was the net profit or loss, right? Initially we checked 100 was the entire profit, yes or no? So sometimes by assuming good values you get the answer. This could be another method. Formula based jaoge, it will become difficult. I hope this is clear. Awesome. Let's move on to the next question then. Okay, I think we'll take these questions. I want you to pause the video, solve all the three, come back, and then we will solve it together. मैं time नहीं दूंगा, pause कर लेना, watch it. Okay, a trader marks an item 40% above its cost price. It's always good to assume numbers. A trader marks an item 40% above its cost price. Okay. So marked price, let's say marked price, cost price मान लेते हैं. Let's say cost price is 100, marked price is 140. Okay, and then gives a discount. Discount किस पे देते हैं? Marked price पे. He gives a discount of 10%. 10% discount means what does the value become? 126. 10% is 14. 14 minus करो, 126 आ गया. Awesome. If the selling price becomes 2520, oh my go. Selling price बोल रहा है वो. Selling price. So when you give it, okay, always understand I've assumed values. So when you give a 10% discount, this was your selling price 126. लेकिन actually कितना है selling price? 2520. Oh, सर तो ये गलत हो गया ना. That's because we assumed a wrong value in a way. Let's just multiply, no? 126 into what will give you 2520? If you see carefully, this is 2 times, 20 times. Oh, so sir 20 times करने सब कुछ, so we will get the correct answer. Okay, what have they asked? The cost price. Multiply this by 20, multiply everything. Basically, multiply everything by 20. They've asked you the cost price, so when you multiply 100 by 20, it becomes 2000. That should be the answer to this question. क्या बात समझ में आती है? बहुत बच्चे इसके अंदर एक चीज और कर लेते हैं. They will assume the cost price to be 100x. Always good. Assume x. Selling price to be 140x. Yes or no? When you give a 10% discount, my bad. यहाँ selling price नहीं है, marked price आएगा. So selling price would be 10% discount. क्या इस पे 10% discount दो? That is 126x. This value, the selling price is given to be 2520. From here also you can establish x is equals to 20. They've asked you the cost price. Cost price में x जगह 20 डालो, क्या आएगा? 2000. 2000 shall be your answer. Is that clear? Both methodologies can be used, assuming numbers and also putting a x around it. I hope this is clear. Next question पढ़ेंगे एक दफा. A shopkeeper claims he is giving a 30% discount, but actually sells at 5% profit. Alright. If the marked price is 2100, find the cost price. तीन ही चीजें हैं, cost price, selling price, marked price. Let's just write it down. A shopkeeper claims he is giving a 30% discount. Okay. Discount किस पे मिलता है? Marked price पे. 30% मतलब 0.7 हो जाएगा, कम किया तो. 0.7 of marked price is your selling price. Yes or no? This is one equation. Second, but actually sells at a 5% profit. इसका मतलब selling price is
1.05 times of cost price. 1.5 मत लिख देना, 1.5 means 50%, 1.05 is 5%. Yes or no? यहाँ भी SP, यहाँ भी SP. Can we compare these two? Yes, you can. 0.7 MP is equal to 1.05 CP. What have they asked? Let's not solve this. Let's just not go ahead of what has been asked. Let's see क्या पूछा है. If the marked price is 2100, find his cost price. Okay. Marked price is 2100. Let's say 0.7 into 2100 लिख दें यहाँ पे. 0.7 into 2100. This is equal to this. So now from here you compute CP. मेहनत लग रही है ना, आसान तरीका सीखेंगे. CP is equal to 0.7 into 2100 upon 1.05. Please be careful. Can I write 1.05 as 105 upon 100? The 100 goes up. Can you cut this? ये देखना आना चाहिए पहले तो. यहाँ दिखता है 520s are 521s are. This is a direct cut. 100 कितना आया? 2000. 100 into 20 is 2000. 2000 into 0.7 is 1400. Please be careful. The cost price to this question shall be 1400. सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी. एक 99 परसेंटाइलर इसके अंदर क्या करेगा बताइए. Now I want you to pause for a second and think. Take 5 seconds. I'll give you 5 seconds in this lecture itself. 5 सेकेंड लो. क्या करेंगे? Either you can directly do one thing. The mark price is given 2100. He gives a discount of 30%. Straight away remove 30%. 10% is 210. 30% would be 630. If you remove 630 and if you're good with math, you would know this number. पहले 600 minus करो. 1500 आया. It would become 1470. Okay. So you have got your selling price, which is 1470. Right? This is 5% profitable. Technically 1.05 times of cost price is selling price. Selling price कितना है? 1470. अगर तुम्हें टेबल्स दिखती हो ना 21 की, मुझे दिखता है 21 5 होता है और 147 is 21 7. From here you can arrive at an answer 5 and here you get 7000. Be careful while doing this. Point वाला तुम 0 हटा लिया करो, point हटा लिया करो. 5 CP is 17,000, CP is 1400 when you solve this. Is that clear? The better you get at numbers, the easier this will become, the quicker you'll be able to solve it in your head. Honestly, एक 99 percentile मैं अगर quant में 99 accept करता हूँ कि लाया हूँ, I can do this in my head. Tough है, एकदम आसान नहीं है, तुम्हें कॉपी में ही करना है फिलहाल. No harm. तुमने पहला मेथड किया, awesome, but you should know this method as well. I hope this is clear. ये तुम्हारा होमवर्क है, करो और इसको फटाक से मुझे कहाँ बताओगे? कमेंट्स के अंदर. I hope this is clear. Okay, अब अपन आते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस पर. क्या बोलता है ये सब जो इतनी चीजें तुमने कहीं देखी है जीवन में? परसेंटेजेस में कुछ पढ़ा था? सक्सेसिव परसेंटेजेस, यस वही है, वही चीज है, सेम ही चीज है. अगर ध्यान से पढ़ोगे, 2 सक्सेसिव प्रॉफिट्स है तो P1 प्लस P2 बेसिकली A प्लस B प्लस AB बाय 100. 1 प्रॉफिट 1 लॉस, तो प्रॉफिट वाला प्लस होगा, लॉस वाला ऑब्वियसली माइनस होगा. और प्रॉफिट और लॉस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन. सो जस्ट रिमेंबर the science behind it, or remember the concept or the logic behind it. I hope this is clear. Okay, is this clear? हाँ सर, समझ में आ गई इतनी सी बात हमको. बस तो फिर शुरू हो जाओ. आ गए तुम्हारे क्वेश्चन. लेट्स सी. 5 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हो. बहुत ही बेसिक सवाल. A trader sells an item at a profit of 20% and then again sells another at a profit of 10%. Please don't make this mistake. This is not based on the previous theory that we learned. One item is sold at 20% profit and another item is sold at 10% profit. Okay. What is the overall percentage profit on both items if CP is the same? Now let's say you do this. जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, 20 plus 10 plus 20 into 10 is 200 upon 100. ये कितना आ रहा है? This is 2. So 20 plus 10 plus 2 is 32. Absolutely incorrect. Be very careful. Question क्या पूछ रहा है? This is not a question on successive profit or successive percentages. It is not. एक आइटम 20% प्रॉफिट पे बेचा है and the other item has been sold at 10% profit. Let's say they've given, okay, let's not say what is the overall profit percentage on both items if CP is the same. Let's say दोनों का CP 100 था. The CP of both items was 100.
One was sold at 20% profit, so it was sold at 120. The other was sold at 10% profit, that is 110. What is the total selling price? 230. What is the total cost price? 200. How much is the profit? Sir, 30. On what? On cost price, which was 200. This is what percentage? This is the question. So this comes out to be 15%. ये पूरा शास्त्र है, कैसे कर सकते हैं इसको? डायरेक्टली किया जा सकता था. ऐसा सवाल है 20 + 10 एवरेज ले लो. एक आइटम 20% पे बेचा है, एक आइटम 10% पे. एवरेज ऑफ 20 and 10 is 20 + 10, 30/2, which is 15. You would have directly got the answer here. Is that clear to everybody? Oh sir, इतना easily हो रहा था. Yes. Now read the next question. A trader gains 30% on one article and loses 20% on another. If the cost is the same, again find net percentage gain or loss. Now again the same thing, but be careful. 30 + 20 मत कर देना. It is gain on one and loss on one. So it would be 30 - 20/2. Average ले रहे हो, which will be 5%. So he will have a gain of 5%. Why? Because this value is positive. I hope this is clear. समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? बहुत आसान था ये. गलती मत करना जो सिली मिस्टेक तूने स्टार्टिंग में की होगी. चलो बढ़ते हैं इससे आगे. Now again the same conceptual thing. एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि बहुत बड़ा है. जनरली परसेंटेजेस में क्या होता है? डिस्काउंट की जगह पे नॉर्मल अगर A + B, यहाँ पे डिस्काउंट जो भी हो, लेट्स से 20% है, दूसरा डिस्काउंट 30% है. सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात हो रही है. तो बाद में क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव होगा ना, यहाँ पे माइनस लगेगा. इज दैट क्लियर? दिस फॉर्मूला नीड्स टू बी रिमेंबर्ड लाइक दिस. बी वेरी केयरफुल. दैट्स व्हाई आई एम नेवर अ फैन ऑफ rote learning of formulas, but just in case किसी को अगर ये जरूरत पड़ती है, you should remember it. Is that clear? Let's do questions based on this. Let's see. Question देखेंगे. Okay. A shopkeeper offers successive discounts. Be careful क्या है? Successive discounts of 20 and 10% on an item marked at 1500. What is the net discount percentage? कुछ नहीं करना है. Simple. 20 + 10, mind you, minus 20 × 10, which is 200 upon 100, which is 2. 30 - 2 is 28%. This is the formula based approach. Logically भी इसको हमेशा solve करने की कोशिश करना. If something they've given 1500, but this value doesn't matter. Honestly, I'll tell you why. Whenever they ask things in percentage, ये hack है. Percentage में पूछा हो ना, honestly matter ही नहीं करती most cases के अंदर value. Now अब मान लेते हैं 100 रुपए का आइटम था. द आइटम वॉज 100 रुपीज. ओल्ड, नॉट ओल्ड, 100 रुपीज. ओके. 20% डिस्काउंट, दैट लीड्स टू 80. ओके. अनदर 10% डिस्काउंट ऑन दिस इज -8, विच कम्स आउट टू बी 72. कितना डिस्काउंट हुआ बच्चों? सर 28% का. करेक्ट. यू वुड हैव गॉटन द आंसर लाइक दिस. दिस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल. अगर ये करना नहीं आएगा ना, तुम फिर वो रणछोड़ दास नहीं बन पाओगे बेटा. चतुर बन के रह जाओगे और फिर देख लेना क्या करना है लाइफ में, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्रोडक्ट अंडरगोज अगेन सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं 2. नेट डिस्काउंट, नाउ बी केयरफुल. नेट डिस्काउंट इज 28. नेट इज 28. फर्स्ट डिस्काउंट वाज 20, तो क्या लिखेंगे? 20 प्लस लेट्स से तो दूसरा डिस्काउंट है वो -20D अपॉन 100. क्या मैं इसको D/5 लिख सकता हूं काट के? हाँ सर लिख लो. D - D/5 को क्या लिख सकते हैं? LCM लोगे 4D/5. yes or no? LCM ले लो. what does this become? 100 + 4D. yes or no? 100 + 4D और नीचे क्या था? 5. 5 goes here, which becomes 28 5s are 140. जिनको 28 5s are फटाफट लिखना नहीं आ रहा, फटाफट शॉर्ट जाकर देखो. there is a short which teaches how to do this calculation quickly. 4D would be equal to 40. hence discount would be 10%. क्या ये बात समझ में आती है? आई होप दिस इज क्लियर. कुछ बच्चे ना बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता है 100 मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस. वो बोल रहे हैं नेट डिस्काउंट इज 28%. सो नेट वी रीच 72. फर्स्ट डिस्काउंट इज हाउ मच? 20%. इस पे 20% डिस्काउंट करो, दैट बिकम्स 80. व्हाट शुड बी द डिस्काउंट हियर टू मेक 80 into 72? 10%. The person
with a very logical brain would have got the answer as 10% here. He doesn't need to do this rote learning methodology. मैं 50 बार बता चुका हूँ. Again I'm saying don't be formula based if you want to crack exams like CAT, IP, MAT. You cannot be formula based. Is that clear? All right. पढ़ते हैं सर इससे आगे. Okay. Now मक्कार, चोर, तुम लोग सब false weight या defective weight problems. All right. Wherein there is a dishonest cost. Dishonest. Not dishonest. वर्बल भी ठीक करो अपनी. बहुत जरूरी है. बाय द वे SALON क्या होता है सर? सलोनी से आई निकल दो. ऐसे बदमाश मजदूर जैसे लोग मत बनो, समझे? दैट इज सलून होता है. हाँ सर सलून होता होगा. नहीं, व्हाट इज इट? सैलॉन होंगे. कुछ आएंगे सर हमको पता है क्या होता है. क्या होता है? इज इट सैलॉन? इज इट सलॉन? फिगर आउट करके मुझे कमेंट्स में कभी कभार बता दिया करो. मजा आता है. वर्बल आनी चाहिए तुम लोगों को. नाउ फॉर्मूला क्या बोलता है फॉल्स वेट का, जो कि रद्दी लगता है मुझे बट पता होना चाहिए. शॉपकीपर यूजेस लेस वेट बट चार्जेस फॉर फुल वेट. ये समझ में आता है? ओके. टेक्निकली गेन परसेंटेज वुड बी एक्चुअल वेट माइनस फ्रॉड वेट अपॉन फ्रॉड वेट इनटू 100. कुछ समझ में आया? बकवास. एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, मजा आ जाएगा. शॉपकीपर यूजेस लेस वेट बट चार्जेस फॉर फुल वेट. ओके, लेट्स से एक शॉपकीपर है जो 1 किलो देने वाला था सामान. ठीक है, दिख रहा है 1 किलो बट दे कितना रहा है? 900 ग्राम्स लेट्स से. सो इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम्स ही इज ओनली गिविंग 900 ग्राम्स. यस, सो वी नीड टू फाइंड द गेन परसेंटेज. एक्चुअल वेट कितना था बच्चों? 1000. फ्रॉड वेट कितना है? 900 अपॉन फ्रॉड वेट कितना है? 900. सो दिस बिकम्स 100 अपॉन 900 इंटू 100. सर ये क्या है सर? कितना आएगा? टेक्निकली 1/9%. 1/9 कितना होता है अगर तुमको आता हो बेसिक परसेंटेजेस? दैट इज 11.11%. इसका आंसर ये होगा. डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? ये टू बी ऑनेस्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज हो गई मेरी नजर में. मैं चाहता हूं तुमको लॉजिक भी समझ में आए. ऑफसेटिंग से समझते हैं. ऑफसेटिंग क्या बोलता है? जिनको समझ आए कोई बात, अच्छी बात है. जिनको नहीं है चिल, कोई बात नहीं, देखेंगे. मैं क्या कह रहा हूं, instead of 900 how much was given? 1000 grams, but he promised 900. yes or no? ये समझ में आता है? तो now he has given. एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा है कि अभी उतरेगा जहन में. मैं चाहता हूं स्लोली अपन नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा. मैं थ्योरी बूस्टर में नहीं डाल रहा है. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं इससे आगे. सॉल्व दिस क्वेश्चन. अभी अनफॉर्चुनेटली फॉर्मूला बेस्ड ही करो. 5 सेकेंड लो, सॉल्व करो. ओके, क्या करोगे? 1000 जो एक्चुअल वेट था उसमें से फ्रॉड वेट माइनस किया अपॉन फ्रॉड वेट into 100. So this is again 1/9 which is 11.11%. Is this clear to everybody? Okay, I'll just give you the offsetting approach. Now that the weight becomes 9/10, basically 900 हो गया ना instead of 1000. I'm just explaining it here. Yes or no? Weight has become 900 instead of 1000. Yes. So उसने तुम्हारा offsetting समझना. ये क्या है सर? Offsetting समझा रहा हूँ. Now weight becomes, what is this? 9/10. Weight becomes 9/10. Then what would happen? If weight becomes 9/10, the profit would become 10/9. What is 10/9? Can you rewrite this into, a simple fraction? 1/9. Do you understand this? Technically this is 1 plus 1/9. Yes or no? ये जो additional है, this is your answer. That is 11.11%. सर ये ऑफसेटिंग क्यों किया आपने? तुमको मैंने समझाया है. परसेंटेजेस में जाकर देखो जहां पे मैंने नंबर ऑफ आइटम्स इनटू द प्रोडक्ट प्राइस इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर करके एक चीज समझाई है. वहां से समझ में आ जाएगा. अगले सवाल पे बढ़ो. तुमने पॉज किया था, फिर से पॉज कर लो. ओके. अ डिसऑनेस्ट डीलर यूजेस अ वेट ऑफ 800 बट सेल्स एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg. व्हाट इज हिज गेन परसेंट? नाउ अगेन actual weight is 1000, fraud weight is 800 upon fraud weight कितना आएगा? इतना सब लिखने की जरूरत होनी चाहिए क्या? You should simply write 2. In fact, you should simply do 200/4. 800 is 1/4. That's it. 1/4 is 25%. That would be the answer. By offsetting, he gives 800 instead of 1000, which is, if you solve this, this is
4/5. If the material becomes 4/5, the profit becomes 5/4. 5/4 is what? 1 plus 1/4. 1/4 is what? 25%. दोनों methodologies आनी चाहिए. A 99 percentiler should know both, but use this. A 95 percentiler should know both, but use this. क्योंकि वो ज़्यादा use नहीं कर पाएगा तो 95 तक रुक जाएगा. But a 90 percentiler, 80 percentiler, please. आना सब कुछ चाहिए. It is extremely critical. This really expedites the process. It makes the question easier. यहाँ पे शायद बराबर टाइम लग रहा है, but बहुत सारे questions में it will become much more easier. I hope this is clear. बढ़ते हैं इससे आगे. Okay, try solving this. I'll give you 5 seconds. Pause कर लो, solve for yourself, and then we shall start. Okay. A trader sells an article at 25% profit. Okay, 25% profit. Super. Had he sold it for 100 more, he would have gained 35%. Okay. Technically, 25% से 35% हुआ. This is a difference of 10 percentage points. So 10 percentage points is equal to 100. Okay, so 100% of the value would be 10% इतना है, 100% मतलब 10 times. इसको भी 10 times कर दो, कितना होगा? 1000. Oh, so this is the cost price. पूछा क्या है? Find the CP. That's it. Question खत्म हो चुका है. Is that clear? इतना सा काम था. एक बार just to verify whether your answer is correct, do one small drill. 1000 is the answer, right? Just check. A trader sells an article at 25% profit. 25% would be 1250. Yes. Had he sold it for 100 more, that would be 1350. He would have gained 35%. Yes or no? Hence verified. अगला सवाल. Pause तुमने करके solve कर लिया होगा. A product marked at 2000. Marked. This is the marked price. Is sold after successive discounts of 20% and 10%. The seller still makes a profit of 20%. Now there are multiple ways of solving this. You know, I'll try to do it in 2 or 3 ways. First way tells me कि मैं 2000 को ना सीधा break करूं. He gave a discount of 20%. 2000 का 20% less करो. 20% would be 400. The price becomes 1600. From 2000, it became 1600. Then there's a discount of 10%. Remove 10% from this, which is 160. So that would become 1440. After this, he still manages to make a profit of 20%. Okay, 20% means 1.2 times of CP is equal to SPE, selling price. This is 1440. 1.2 and 144 are very nice. 12 का square होता है. CP, if you solve this, would become 1200 rupees. Just to verify, go other way around. 1200 पे कितना profit करोगे तो 1440 होगा. That would be 240 rupees. 240 is 20% of this. Is this clear? This is one methodology that you can employ. Second, successive discounts पता है उसका formula लगाओ. 20 plus 10 minus, don't forget successive discounts demands minus 20 into 10, basically 2. This is 28%. So the discount is 28%. Then you find 28% of this, which is 560. 2000 में से 560 minus करो, कितना आएगा? This would be again 1440. Then you again employ this methodology. क्या ये बात समझ में आती है? इतना सा करना था. अब 2000 is a matter of no consequence. 100 rupees मान लो, क्योंकि again CP पूछा है, तो okay. I think इसमें तुम अभी मत करो. This will be a little tricky for you, but we will learn this methodology later on. 100 मान कर भी किया जा सकता है. जितनों को आता है कमेंट्स में लिख के बताओ मेरे को कि कैसे होगा. ठीक है? Assuming 100, you can actually get the CP. So this is something that I'll keep for later. But now this is the answer to these questions. बढ़ते हैं इससे आगे बाबू. हाय नहीं बढ़ना इससे आगे सर. क्यों? क्योंकि तुम्हारा लेक्चर खत्म. थ्योरी बूस्टर इज डन एंड डस्टेड. अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे 80 परसेंटाइल की ओर, ताकि परसेंटेज में कुछ हल्का फुल्का उखाड़ सकें जीवन में. आई होप दिस इज क्लियर. मिलते हैं अगले वीडियो में. सी यू देन.